with that of the second chapter, that is the structure of atom. ठीक है, जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? ऑल ऑफ अस नो दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो बेसिक हमें पता होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन 1830 में माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था. दीज इलेक्ट्रॉन्स वर आल्सो नोन एज कैथोड रेज एंड the main thing was that it doesn't depend on the nature of the gas. Abhi, when I want to say that it doesn't depend on the nature of the gas, what does this mean? This means that फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया था? एक यहाँ ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये हमारा एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. ठीक है, हाई वोल्टेज लिया उसने और लो प्रेशर लिया, उसमें कुछ गैस ली और गैस को आयनाइज किया. उसने देखा कि ये जो कुछ समथिंग was there which were coming out of the cathode and they are moving towards the anode. ये जो ions थे, they are not, we can't see them, but we can observe them. There were many experiments by which we can observe them. तो यही जैसे जैसे हम जो गैस है वो गैस चेंज कर रहे थे, तो गैस चेंज करने पे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही थी. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट they doesn't depend on the nature of the gas. But afterwards, जे जे थॉमसन आए जिसने हमें क्या दिया? चार्ज बाय मास रेशो दिया. चार्ज बाय मास रेशो दैट कम्स आउट टू बी 1.75 into 10 raised to the power 11 कूलम पर केजी. ये जो जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशो दिया, ये कहाँ से दिया? इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो जो रेस थी वो स्ट्रेट पास ऑन हो रही थी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड. वो डिफ्लेक्ट हो रही थी. कितने डिफ्लेक्ट हो रही थी, कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही थी? इट वाज डिपेंडिंग ऑन दैट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन द सेंस, जितना ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो रेडिएशन है, आपका जो डेविएशन है वो जितना ज्यादा होगा, मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल डेविएट मोर. ठीक है ना? मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन. द सेकंड वाज इट इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल. हल्का पार्टिकल रहेगा तो मोर डिफ्लेक्शन, हैवी पार्टिकल लेस डिफ्लेक्शन. एंड नो डाउट इट विल ऑल्सो डिपेंड on the interaction of the electron with the electric and magnetic field. If interaction will be strong, then strong deviation, more deviation, and if it is less, then less deviation. उसके बाद मिलिकन आया. मिलिकन ने हमें ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसने हमें क्या बताया? He told us the mass of an electron which was 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. और अगर ये मास को आप चार्ज बाय मास रेशियो में रख दो तो आपका चार्ज भी आ जाएगा. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. राइट? सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज नोन एज अ प्रोटॉन और कैनाल रेज. ये जो प्रोटॉन और कैनाल रेज थे, ये दे in the same experiment, this time they are moving from that of the anode to cathode. इस समय वो एनोड से निकल के कैथोड के पास जा रहे थे. It means they are oppositely charged. That's why they are moving towards the cathode which is negatively charged. And the main thing that it was depending on the nature of the gas. gas को जब मैं चेंज करी थी, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, अगर if I'm changing the gas, then it is the value was changing. The value was changing means ये जो value थी, it was the multiple of the fundamental unit of the charge. Multiple of the fundamental unit of charge, because you know that inside that of the nucleus there are the protons, and the protons can be 2p or 3p or 4p, 4 protons or 5 protons. So basic proton का जो charge होगा वो कितना होगा? That is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. अब अगर उसमें 2 प्रोटॉन है तो डबल हो जाएगा, 3 प्रोटॉन है ट्रिपल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला? मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द चार्ज. द चार्ज वाज प्लस 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, जस्ट सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट हैविंग द अपोजिट. वो जा रहा था हमारा कैथोड से एनोड, ये जा रहा है एनोड से कैथोड. मास वाज 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. सो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो है सबसे छोटा, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट ऑफ द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से जो मेरा सबसे हल्का निकला है, दैट इज नोन एज अ प्रोटॉन. थर्ड वन वाज नोन एज अ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन, इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हैविंग नो चार्ज. ठीक है, इट वाज फाउंड इनसाइड दैट ऑफ द न्यूक्लियस. इट वाज हैविंग द सेम मास एज दैट ऑफ द प्रोटॉन. इसका जो मास था वो मास कैसा था? एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. It was discovered by Chadwick. Okay. प्रोटॉन किसने किया था? प्रोटॉन हमारा किया था गोल्डस्टीन ने. ठीक है, तीनों के हमें पता होना चाहिए. It was discovered by the Goldstein and the neutron was discovered by Chadwick. कैसे किया था चैडविक में? By bombarding that thin sheet of the beryllium. बेरिलियम की थिन शीट ली थी और उसे बम्बार्ड किया था किससे? अल्फा पार्टिकल्स. ये जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं, ये होते क्या हैं? These are the rays. कौन सी रेज हैं? रेडियो एक्टिव रेज. अब ये रेडियो एक्टिविटी was first of all given by the Henry Becquerel.
हेनरी बैक्वेरल था जिसने सबसे पहले हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। नो डाउट इस पे काफी रिसर्च और काम किया मैडम क्यूरी ने, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड एंड वाज टोल्ड बाय द हेनरी बैक्वेरल, एंड देयर आर द three rays. One was known as alpha, another one was known as beta, third one was known as a gamma rays. Gamma were the neutral rays and they are the most penetrating. ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करती हैं, most penetrating. ठीक है? While that of the beta, they were just same as that of the electron with a negatively charged, and the alpha particle, which are the least penetrating, ये सबसे कम है, they are the least penetrating, they are doubly charged helium ions. ये क्या है? Doubly charged helium ions. First atomic model was given by Dalton, हम सबने पढ़ा हुआ है. Later on, J.J. Thomson ने दिया था, याद करो कौन सा वाला? वो पुडिंग वाला, right? And then Rutherford come and Rutherford gave us the nuclear model of an atom by doing an experiment in which alpha particle scattering experiment in which alpha particles, they were bombarded on that of the thin sheet of gold. In his nuclear model of an atom, he mainly emphasized on the 3 points. First, all the mass is centered at the center point, tiny center point, which is known as a nucleus. Second, the electrons, they are moving in the outside the nucleus in the orbits. And third one, there is an electrostatic force of attraction between that of the electron which are moving in the orbit and the nucleus. But there were some drawbacks in the Rutherford. What were those drawbacks? There were mainly two drawbacks. First, he was unable to explain the stability of an atom. According to that of the classical theory, when the electrons they are moving, they are losing their energy. And if it is happening, then due to electrostatic force of attraction, it is continuously attracted towards the nucleus, and a time will come when it will collapse inside that of the nucleus, which was not happening. And the second drawback was it was unable to describe the electronic structure of an atom. किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड हैं वो सब नहीं बता पाया. Then came Maxwell. मैक्सवेल जो था उसने क्या किया हमें, उसने सबसे पहले फर्स्ट he gave us the wave nature of radiation. He first reveals that the light waves, they are the electromagnetic waves. और जो मैक्सवेल्स वेव थ्योरी थी, मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें उसने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन दैट ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, but all of them they have same velocity in the space and in vacuum, that is 3 × 10⁸ meter per second. ठीक है? So there are many electromagnetic radiations. यहाँ पे बहुत सारी electromagnetic radiations हैं, वो सब एक दूसरे से डिफर कर रही हैं किस बेसिस पे? On the basis of the wavelength and the frequency. और जब हम इन electromagnetic radiations को किस में करते हैं? We are arranging them in the increasing order of their wavelength, or we are arranging them on the decreasing order of their frequency. Then that pattern or that arrangement, that one is known as electromagnetic spectrum. ठीक है? तो जिसमें से ये जो विबग्योर रीजन है जो हम देख पाते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है जो कि हम देख पाते हैं. अदरवाइज इट्स इसमें अल्फा तुम्हारे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये तुम्हारा पहले गामा हो जाएगा, फिर तुम्हारा एक्स रे आ जाएंगे, फिर तुम्हारे यूवी आ जाएगा, यूवी के बाद तुम्हारा विबग्योर आ जाएगा, विबग्योर के बाद तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन आ जाएगा, देन माइक्रोवेव रीजन आ जाएगा, देन एफएम, एएम एंड देन लॉन्ग रेडियो वेव्स. This is known as electromagnetic spectrum. So lambda, we are denoted lambda. Lambda is the wavelength. SI unit is meter, and it is the distance between the two crest or trough. Nu is the symbol for the frequency. Frequency is the number of the waves in 1 second, and its SI unit is hertz. V is the velocity of all the electromagnetic radiations, which is equals to 3 × 10⁸ meter per second. V is equals to nu lambda. This is a relationship which gives between the velocity, frequency, and wavelength. Then wave number. Wave number is inverse of wavelength, is known as wave number, and the wavelength is actually meter. That's why we can say that wave number, SI unit of wave number, is per meter. And last one is amplitude. Amplitude is the height of the crest or the trough, which is denoted by small a. No doubt, this Maxwell's wave theory was really successful in explaining the interference and the diffraction. These are the two processes which shows the wave nature of the light. But what about the particle nature? He was unable to explain the particle nature of the light, which was given by the black body radiation, photoelectric effect, and the line spectra of atoms. So this was his achievement, but these are the drawbacks. He was able to explain the wave nature of light as the electric and the magnetic field, they are perpendicular to each other. And he was unable to explain the black body radiation, photoelectric effect, and the line spectra of atoms. Means I want to say that he was unable to explain the particle nature of the light. ठीक है?